Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with control flow instructions, right? Control flow instructions alter the flow of execution. So, in that, three categories are there that we discussed. One, selection statement or conditional statement. In that, we discussed if else, and if else. Second, iterative instructions, in which there are only two. One is a while loop and a for loop. And please remember, for loop in Python is only available for iterable objects, to traverse iterable objects. And third, transfer instruction. In that, break and continue we have discussed already. One more is there, that is pass. Now, why this pass instruction is provided, that I'll tell you. Now, what Python says is according to the syntax, that is according to the grammar where you're supposed to write any instruction, but you don't want to write, then you can put dummy statement pass. According to the syntax, you are compulsory supposed to write some statement. Like suppose you're writing if and some condition, okay? You have to write some statement here, else some statement. But suppose if the condition is true, you don't want to do anything, else you want to do something. Example, not necessarily it is practical, but I'm saying if the condition is true, I don't want to do anything, else I want to do something. So else I'll write some statement. But what about if? Because I don't want to do anything here. But Python says grammatically you have to write some statement here. Then you will put a dummy statement, or you can call it as a proxy statement called pass. Getting? So pass is like a proxy, or pass is like a dummy statement. It's not doing any operation, no activity, no operation. It is just a dummy where you're supposed to write any instruction. You're compulsory supposed to write an instruction, but you don't want to write. Then Python says put a dummy instruction or a proxy instruction called pass. Like suppose, for example, you're creating an empty class. Okay, now we are going to learn all this in object-oriented programming. So I want to create a class cat, but at this moment I want to create a empty class. Like if the same thing in C++ you are doing, you'll just put open brace, close brace, done. But here I'll write a header line, class cat colon, and then I want to keep that body empty. At this moment, I don't want to write anything in that class. I want to keep that class empty class. So you cannot write like this, class cat colon. According to the rule, it says you have to write some statement here. Then what statement you'll put? Pass as a dummy. Or suppose you are creating a function, def foo. In Python, you create a function like this, def function name, round bracket. Again, functions module is going to come, don't worry. Okay? So I'm writing def foo, round bracket, colon, and then the body of that function. But at this moment, I just want to keep that function empty. Empty rakhna. I don't want to write any body here. So I'll put a proxy statement called pass. Getting? So it is just a no operation instruction, or it is just like a dummy instruction where it is mandatory to write an instruction. According to rule, कायदे से उस जगह पे इंस्ट्रक्शन लिखना है, बट आपको नहीं लिखना है, तो फिर आप डमी इंस्ट्रक्शन क्या डालोगे? पास. Getting? So that is the rule. If a block is compulsory to be added according to the grammar, syntax means only grammar, but you don't want to write anything at that moment. At that moment, उस जगह पे आपको कुछ टास्क नहीं लिखना है. Then pass can be used. Some example देखो, जैसे ये एक function है, def abc, and I want to keep the body of that function empty.
So you cannot just write def abc colon and leave it. It says body लिखना ही पड़ेगा. तो फिर उस जगह पे क्या लिखोगे? पास. या क्लास बना रहे हो, empty class. So you have to write the body of that class. But you cannot leave that blank. सिर्फ class test colon लिख के नहीं चलेगा. नीचे body लिखना ही है. But at this moment, I want to keep that body empty. So you have to put a dummy statement. Getting? ऐसे if else के लिए मैंने बताया, like if में कुछ लिखना है else. See, if you just try to write like this, if 10 less than 20, you don't want to do anything. Getting? And directly you're trying to write else like this, else colon. Does it give a syntax error? Yes. It says if के अंदर कुछ ना कुछ तो statement चाहिए ही चाहिए. You cannot write directly else. Getting? But the same thing, if I'm trying to do it, here if I put pass and then else something, it will do. Does it give any error? No. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे कुछ नहीं करना था, else में कुछ करना है. तो कंडीशन ट्रू है तो I don't want to do anything. So you don't want to do anything, so you put pass. Anything after pass if you write, okay, is of no, then pass is of no use. मैं पास लिखना कुछ काम करनी है, इसके बाद के जो इंस्ट्रक्शंस है वो रन होंगे. Getting? Like if you are writing while some variable and writing I equal to 1, then while I less than 10, and suppose I'm writing pass, and after that also I'm writing print I, and I'm writing I equal to I plus 1. Either you write like this. Now in this case, writing that pass is of no use. Why? Because anyway pass के बाद दो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाता. जब आपको पूरा बॉडी एम्प्टी रखना था, then writing pass was of some meaning. Correct? So I hope it is clear. So you'll remember break, continue, pass. Few more transfer instructions are there, like raise है, फिर return है, वो appropriate modules में सीखेंगे. ठीक है? Some trace output questions we'll see. You people can tell me. A comma B comma C equal to true, false, true. These are multiple assignment. True will get stored in A, false will get stored in B, and again false will get stored in C. Getting? True will get stored in A, false will get stored in B, and false again in C. And you're checking A or B and C. Remember, precedence is more to and. ठीक है, तो ये जो बी एंड सी है ये एंड के पास जाएंगे. तो इट विल बी लाइक दिस, ए और एंड देन लाइक दिस, बी एंड सी. मींस कौन नियर है, बी एंड सी, क्योंकि एंड को प्रेसिडेंस जाता है. तो इट इज लाइक दिस, ए और एंड देन दिस ब्रैकेट. ओके, so now first we'll check what a, what is the value of a? True. Now you know in ORing, when one is true, the entire result is true. So will it check this bracket B and C? Yes. No. No. Why? Because और में A पहले true आ गया ना. Getting or no? और में अगर एक true है, पूरा true है. हाँ, अगर ये A false आता था तो फिर ये bracket दिखता था. Understanding guys? Concept Yes. समझ में है ना? हाँ. तो A और B and C लिखा है, तो precedence wise and को जाता है, तो ये दोनों का ऊपर bracket चला गया. Like this, bracketing rule follow होता है. प्रेसिडेंस वाइज ब्रैकेट्स डालेगा, तो टोटल ब्रैकेट ऐसे और इन दोनों को. तो सॉल्व करते समय तो पहले ए का वैल्यू देखेगा, तो ए इज ट्रू. नेक्स्ट इज और. तो और में अगर पहला ट्रू है, पूरा ट्रू है, व्हाई इट विल चेक द रिजल्ट ऑफ दिस होल ब्रैकेट. ये ब्रैकेट का रिजल्ट देखने का मीनिंग ही नहीं बनता है. क्यों? क्योंकि पहले ही क्या आ गया, ए एस ट्रू, एंड देयरफॉर इट विल प्रिंट आउटपुट एज कैपिटल पाइथन. इज इट क्लियर?
Yes or Yes. no? Then this is something more complicated. Again, देखो. Here again separately initialize किया. A as true, B as false, C as false. Check this. Now first याद रखना है not A or B. So not is having more precedence. हाँ? ऐसे होगा not of A or B. Now tell me A is true. A is true. True is not is false. So this part is false. False or false. ये part तो false आ गया और B भी false है तो false और false entire false right so it will come Yes. down अब नीचे जब आएगा तभी भी देखो हाँ, कैसे है ये not of A not of B and C मीन्स ये पूरा ब्रैकेटिंग मैं तुम्हें ब्रैकेट कैसे अप्लाई होगा वो बताता हूं देखो not of A ठीक है और ये not of B ठीक है and C राइट तो एंड को ज्यादा प्रेसिडेंस है तो ये एंड ये इसके ऊपर ब्रैकेट आएगा एंड फिर पूरा ब्रैकेट आएगा यू शुड नो हाउ द ब्रैकेट इज डन so now tell me not of A. A is what? True. True is not as false. So और है और में अगर एक false है तो उसको अगला पार्ट के लिए जाना पड़ेगा और है ना और में ये पूरा ब्रैकेट false आ गया तो इट हैज टू गो अहेड तो अहेड जब आता है तो पहले ये not of B. What is B? False. False का not true. बट एंडिंग में अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू है कि नहीं ये देखना पड़ता है इन एंडिंग both should be true. In ORing, if first is true, the entire true. In OR ANDing, if first is false, entire false. Correct? So not of B. B is false. False not is true. As it is AND, it has to check whether C is true or no. But C is false. Right? So true and false, false ही और ये भी पूरा false है. So is the whole answer going to come false? Yes. Getting? Therefore, it will come to next one. अब देखो next में कैसे है? Not of A. ठीक है ये एक आ गया और B और अगेन not of B ये ठीक है and A अब and को ज्यादा प्रेसिडेंस ली ये दोनों ब्रैकेट्स चले जाएंगे ठीक है फिर और एंड और तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगा ये और ये लाइक दैट दिस ब्रैकेट और B और ये पूरा ब्रैकेट अंडरस्टैंडिंग प्रेसिडेंस एंड को ज्यादा है उसके पहले नॉट तो नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी बट ये नॉट ऑफ बी एंड ए ये पास में जाएंगे मींस मैग्नेट ये है तो ये दोनों इसको चिपकेंगे ये ब्रैकेट बन गया तो अभी ये भी और है ये भी और है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा तो दिस और दिस रिजल्ट और दिस रिजल्ट तो व्हाट इज ए फॉल्स फॉल्स सॉरी ट्रू तो ट्रू का नॉट फॉल्स हो गया राइट ओके सो और है और अगला ट्रू है कि नहीं देखेगा एक फॉल्स है तो एटलीस्ट सेकंड इज ट्रू और नो इट विल चेक व्हाट इज बी फॉल्स अभी और है तो एटलीस्ट ये ब्रैकेट ट्रू है कि नहीं देखेगा राइट तो बी इज फॉल्स फॉल्स नॉट इज ट्रू एंड ए इज ट्रू नाउ टेल मी ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू सो this bracket is false or this is false or this whole bracket has come what true so or in में एक true है तो भी final true so is this whole thing going to come true and print 3 yes do you agree or no Yes. bracketing important है तो याद रखना कि ये not of a पे bracket है not of b but not of b and a क्योंकि and को ज्यादा तो ये दोनों
पास में चले गए, ठीक है। फिर दिस ब्रैकेट और दिस बी और दिस होल ब्रैकेट, तो ऑब्वियसली ये ये ट्रू आता था तो आगे दिखता भी नहीं था, बट ये फॉल्स है इसलिए बी ट्रू है क्या दिख रहा है, बट ये भी फॉल्स है इसलिए ये ब्रैकेट ट्रू है क्या नहीं दिख रहा है। तो इन दिस होल ब्रैकेट this not of B is coming true, A is coming true. In ANDing, when both are true, the final result is true. Therefore, this whole thing come true. It will print 3. Getting? You can try also. You can type and see. ये type करके भी देख सकते हो. Okay, I forgot to tell you about range function. So first I'll explain about range. Okay, range function, what it does. Okay, so Python has given one data type. Range एक data type भी है. We have seen one data type called int, float, complex, string, boolean. ये 5 data types से देखे. This is also one data type, a range. Uh, we feel as if it's a iterator. Actually, it's a generator. Lazy होता है. सब values पहले ही नहीं generate करके देता है. Getting? But it still comes under category what? Iterable. Therefore, you can use it in a for loop. So when you give range n, okay, ये range n, it will give you one generator of type range only. Range type का ही देगा, in which values will be from 0 till n minus 1. ये n exclusive होता है, n inclusive नहीं, n exclusive. It will give values from where till where? 0 till n minus. But 0 till n minus 1 values पहले ही generate करके नहीं रखता है, like list. In a loop, when you use it, it will give you one by one. वो आपको एक एक करके देगा, इसलिए उसको जनरेटर का है. It will produce the next value and give you, next value and give you. पहले ही प्रोड्यूस करके नहीं, इसको लेजी कहते हैं. It is called as a lazy evaluator, or you can say lazy iterable. Understanding? तो रेंज अगर हमने दिया रेंज 5, रेंज 5, तो हमें लगता है कि इट क्रिएट्स एंड गिव्स यू वन इटरेबल, एक इटरेबल लाके देगा जिसमें वैल्यूज क्या रहेंगे 0 टिल 4, 5 एक्सक्लूसिव, तो 0 1 2 3 4. बट होता क्या है कि हमें लगता है कि ये एक इटरेबल बना के दिया 0 to 4, बट ये पहले ही नहीं जनरेट करता है. इन अ लूप व्हेन यू यूज दिस रेंज, इट विल कीप गिविंग यू द नेक्स्ट वैल्यू. वो रन टाइम जनरेट करेगा, पहले ही जनरेट करके नहीं रखेगा, इसलिए उसको कहा है लेजी इवैल्यूएटर. It will give you 1 again in a loop. When you use it, it will give you next 2 3 4 like that. So range 5 or range n, when you give, it will give you values from 0 till n minus 1. Getting? But it is also a data type. इसका भी एक object आएगा. It is the object of class range. जैसे class int है, class float है, getting? Class str, class bull, class complex. Same way there is class range, and we are going to learn many more like class list, class tuple, class dict, class set. Getting? But वो lazy नहीं होता है. List में सारे values पहले ही list out किए. Getting? इसमें ये values runtime produce करके देते जाएगा. I'll give you demonstration of it. Don't worry. देखो, अभी अगर आपने range m and n दिया, m, n, दो values दिए. Okay, so it will produce values from m till n exclusive with a step of 1. ऐसे m plus 1, m plus 2, going on till n minus 1. माने n inclusive नहीं रहेगा, means n के पहले तक ही रुकेगा. If you are adding and if it is going beyond, then it will not take that value. Means it is going to take till n minus 1 only. So here by default the step is how much? 1. Always it increments by 1. And third, तो यहां भी याद रखो ये पूरी लिस्ट पहले ही बना के नहीं रखेगा.
भले वो इटरेबल कैटेगरी में, मीन्स इसको आप लोग फॉर लूप में यूज कर सकते हो, इट इज अलाउड टू यूज इट इन अ फॉर लूप बिकॉज इट कम्स अंडर iterable, getting, but it is not produced and keeping all, it is generating it at runtime. वो आपको अगला वैल्यू जनरेट करके देता है, पहला वैल्यू ये देगा, तो when you again call it in a loop it will give you next value, okay. And then again we have range m comma n comma step. You can give step also. So what step you give, that it keeps adding in m. So m plus step, m plus twice step, all these things in 12th in series and all. 12th में आपको एक 12th या 11th में रहता था, एक सीरीज का चैप्टर होता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज रहती थी. एंड देन दे यूज्ड टू टेल दैट फाइंड द nth टर्म, तो उसका जनरल फॉर्मूला बिल्ड करो, कुछ याद नहीं आता है ना. तो 12th 11th 12th में अगर मैथ्स परफेक्ट किया तो यू शुड रिकॉल दैट. Range m comma n comma step. So it will start from m plus step, m plus twice step, m plus thrice step, going on. n नहीं लेगा, exclusive m. ठीक है? I'll show you the demonstration. It will be more clear. See, if I'm writing r equal to range 5, r is a range object. हाँ? अगर आपने print करके देखा r को, it will not give you all the values 0, 1, 2, 3, 4. ऐसे सारे वैल्यूज दिखाएगा नहीं. इट विल जस्ट से इट इज अ जनरेटर एंड यूज मी इन अ लूप, आई कीप गिविंग यू द नेक्स्ट वैल्यू. इट इज लेजी. देखो, इज इट जस्ट टेलिंग रेंज 0,4. यू कैन प्रिंट इट्स टाइप गाइस. देखो इसका टाइप प्रिंट करके देखा ना, तो इट विल प्रिंट क्लास रेंज, मीन्स अल्टीमेटली इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट रेंज डेटा टाइप. And if you use this R in a loop, it will keep generating that values one by one. 0, 1, 2, 3, 4, 5 exclusive. देखो आपको चाहिए तो मैं for loop में use कर रहा हूँ. For I in range R, sorry, range R नहीं लिखना है, सिर्फ R, क्योंकि R already range है. Getting? तो for I in R, print I. Getting? So it will keep generating the next value and give you. क्यों? क्योंकि R ऑलरेडी रेंज है, तो रेंज इज लाइक अ इटरेबल, प्लीज रिमेंबर. बट इटरेबल में कैसे होता है, सारे वैल्यू पहले ही लिस्ट आउट रहता है. ये पहले ही लिस्ट आउट नहीं करता है, ये एक एक वैल्यू जनरेट करके आपको देता है. गेटिंग? तो फर्स्ट वैल्यू 0 देगा, फिर 1 देगा, 2, 3, 4 एंड 5 एक्सक्लूसिव होता है, तो 4 तक ही प्रिंट होगा. कैन यू सी? 0 to 4. Now instead of writing R, you can use that range directly here. Can I write like this? For I in range 5, print I. Will it give 0 to 4? See. Getting? And as I said, for I in range, you can give start and end also. So I'm giving 10, 20. So it will start from 10 till 90 because default step is 1. Default the step is 1. Now you can print and see this I. Here also, is it generating and keeping all 10 till 19 already? या runtime generate करके दे रहा है? But still it is iterable category. क्यों? क्योंकि for loop में सिर्फ क्या allowed है? According to the rule, what is allowed at this place in the syntax? If you recall the syntax of for loop का syntax जरा recall करते हैं. ठीक है? देखो, यहाँ strictly क्या आना चाहिए इस जगह पे? According to the rule, iterable. Getting? For I in iterable. That can be sequence. So as iterable is allowed, so how you are using range? So range is a generator, but generator also come under that category. Only the difference between iterable and generator is in iterable all the values are already generated and kept. iterable में जो जो values है वो पहले ही list out करके रखे हैं ना. Yesterday जैसे मैंने एक list बनाया था, याद है? L equal to, उसमें राम, सीता, 4.5, कॉम्प्लेक्स नंबर सब रखा था. And then I wrote L over here.
So in that L, already the values are there. It is just retrieving one by one. But in range, the values are runtime generated, but still वो iterable category में. So will it generate values one by one from 10 till 20? 20 exclusive. देखो, step भी दे सकते हो. Like in this loop only, I'm just putting step here as 3. It will start from 10 and it will reach till 20, 20 exclusive. So 10, 13, okay, 16, 19. After 19, it is going to become beyond 20. So it will stop at 19. See, negative steps भी हो सकता है. Okay, like, but then you have to give start accordingly. Start ज्यादा देना है, end कम देना है. Step भी दे सकते हो. Like I'm giving step -1. So it will start from 20, and every time how much it will add? -1. So 20 minus 1, 19. 19 minus 1, 18. Like that. But 10 exclusive, हाँ, याद रखना. 10 exclusive, तो उसके पहले ही stop होगा, that is 11. Getting? Steps can be negative and not necessarily only -1. It can be -3. So it will start from 20, then 17. Getting, guys? 20. 20 के बाद -3 किया 17. -3, 14. Then 11. Okay? Then 11. And उसके बाद नहीं जाएगा. See, 20, 17, 14, 11. तो accordingly. But please remember, range भी किस जगह पे use किया जा सकता है. This range object, it's actually a range object. So range object, can we use it in place of iterable? Yes. जहां iterable allowed है, वहां range allowed है. Only the difference is normal iterable, all the values are already listed. Does range already list and keep, or is it lazy? जब जरूरत है तभी जनरेट करके देता है. It is lazy. हाँ, मीन्स जब जरूरत है तभी जनरेट करेगा. गेटिंग? Yes. सेम रियल लाइफ प्रिंसिपल्स भी होते हैं बहुत सारे. In there are real life principles बहुत सारे. If you go to any famous वड़ा पाव शॉप रहेगा, तो he knows that यहाँ मेरे यहाँ इतना रश है, तो मैं ऑन डिमांड नहीं, उसके पास पहले ही इतने सारे बना के रखे रहते हैं. बट जिसके पास इतनी गर्दी नहीं रहती है, तो जैसे कस्टमर आएगा वो बनाएगा फिर देगा, कस्टमर आएगा बनाएगा देगा. Getting that way. So here, as you ask, it will generate and give. It will not produce and keep already. Getting? And normal iterable रहता तो ये सारे वैल्यू पहले ही प्रोड्यूस करके रखे. You are just fetching from it. Getting? So please remember all these things. Range, we will be using it so many times in the loop. तो ये वाले केस में क्या क्या प्रिंट होगा बताओ अभी. For I in range 2. So range 2. So will it take values 0 and 1? Yes. Generator hai. It will generate first 0, then 1. So 0, 1. In this case, will it take 4 first and 5? 6 inclusive hai kya? Nahin. 2 inclusive? Nahin. So 4 and 5. So is it going to produce 0 and 1, 4 and 5? Yes. Okay? Coming to next one. I equal to 1. Then we are writing a while loop. While true, we are just checking whether I is divisible by 3. Is it right? I mod 3. I mod 3 means you are checking the remainder of I divided by 3. And if the remainder is 0, means you are checking whether it is divisible by 3. If it is divisible by 3, break, come out. No, then print I increment 1. Okay. But if you remember the previous module अगर याद है, compound arithmetic, सब कुछ पढ़ाता हूं उसके ऊपर ही बेस सब रहता है. Getting? So if you remember our previous module, in that at the very end part only, when we saw compound arithmetic assignment, that time I have told you, if there is a space,
between that plus and equal, does it generate a syntax error? Yes. I equal to 10. And if I'm writing I plus equal to 5, no problem. But I plus space equal to 5. By any means between plus and equal, there is a space, it gives a syntax error. Same thing here, it is going to happen. Plus and equal, there is a space. But if suppose I'm saying there is no space, then what it will print? First, I is 1. I is 1. Is 1 divisible by 3? No. So will it print 1 and make it 2? Again, is 2 divisible by 3? No. It will print No. 2 and make it 3. Come. Is 3 divisible by 3? Yes. 3 mod 3, 0. Break. So is it going to print only 1 and 2? Yes. Okay. But 1 and 2, if there is no space, and if there is a space, syntax error. Syntax. Okay. So here it depends. So if they give you same code, but there is no space, then you have to give 1 and 2. You have to observe it. If there is a space, then you have to give syntax error. Okay, now let's see. This also yesterday, when I was explaining for loop, I was telling about iterable objects. That time also I've told you. What do you say? X equal to 1 to 3. I'm writing for I in X, print I. कल का लेक्चर ध्यान से याद करो, स्पेशली जब फॉर लूप सिखा रहा था. वन बाय वन ये होंगे सर 1 2 एंड 3 ऐसा. अगेन थिंक अगेन सोचो. टाइप करके नहीं बताना. वैल्यू कॉपी होंगे इटरेबल के वैल्यू जो टेम्पररी वेरिएबल लिया था उसमें कॉपी होंगे. हाँ, okay. You are telling the working of for loop. Yes. You are telling me the working of for loop, which is perfectly fine. But will it work here in this example? It will write those numbers in a serial order. Again, same thing. You are also उसके साथ उनके पार्टी में जा रहे हो आप. Getting? The same thing what she said. It will print 1, It 2, should come, right? Like if we are giving it should consider at least as a string 1 2 3. means what you want to say. It should be in between double quotes 1 2 3. Should be, that is okay. Means you are telling क्या होना चाहिए था. But क्यों आया error? Because we cannot define anything which is not under the double quotes, right? If we are giving 1 2 3 to the x, it should be at least defined as a string, right? At least as a string. But दूसरा क्या हो सकता है यहाँ allowed? You're again forgetting. For loops are S. हाँ X के जगह S चाहिए था ऐसा. Sequence. Again, you are not coming to the main point. बेसिक को नहीं आ रहा. बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना तो ही कुछ भी आंसर कर सकते हो. ओके, ही इज सेइंग कि ये स्ट्रिंग होता तो चलता था, बट यू आर नॉट कमिंग टू द बेसिक्स. अब भी थोड़े समय, रेंज के समय भी मैंने बताया. एट द टाइम ऑफ रेंज ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज अलाउड हियर फॉर टेम्पररी इन, एंड मैंने इतना बम्बार्ड करके बताया. In Python, for loops are only applicable for which type of objects? Iterable objects. Then now you know it. कि यहाँ strictly कौन होना चाहिए? Iterable objects. Iterable होना चाहिए कि नहीं? तो he said like Sohail बोला कि string होना चाहिए. At least it should be a string. So you're not coming to the main point. Basics को आओ. हाँ. यहाँ जगह सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ना. सीक्वेंस बोलो, इटरेबल बोलो, बट वो होना चाहिए ना. तो is x equal to 1 to 3 a iterable object or is it a integer object? It's an integer object. It's an integer object. Is integer object the iterable object? No, they are not. They are not. Getting वो स्केलर वैल्यू है. एंड ये कल भी बताया, कल के लेक्चर में ही हुआ. चाहिए तो देखो, रिकॉर्डिंग डाल दिया. गो अगेन एंड गो टू दैट. पूरा वीडियो भी मत देखो. गो टू दैट स्पेसिफिक
timing और जाके देखो, when I started with a for loop, that time the same example also I told. X equal to 1 to 3, it is a scalar value guys. वो single एक value है 123. It cannot be accessed digit by digit. It is a scalar value. Understanding? So can I use that X over here? No, इस जगह पे strictly कौन चाहिए? ये X की जगह पे iterable object. Develop. iterable object. So is X a iterable object? It is not. It is not. It's an integer object, guys. Integer. Integer is a scalar value. Scalar concept समझ रहा है ना? It is atomic value. इसको आगे break नहीं. It is single value 123. You understanding? So it is a scalar value. It is not a iterable, and it will generate a error. हाँ, now as we said कि string होना चाहिए था, तो अगर हम string देते हैं तो it will work because string is a sequence. String is a sequence. String is like a iterable. So string you can traverse character by character, not this one. Getting? तो strictly उस जगह पे क्या होना चाहिए था? देखो, I'm putting हाँ. If you want, I'll take for I equal to 1 to 3 for x in I, okay, and print x. It is going to generate an error. Can you see? Is it giving int object is not iterable because you're using I, and I is a which type variable? Integer type का variable है, वो iterable नहीं है. Same code, if I make this as a string. In Python, writing string in single quote, double quote doesn't matter. And now if I write this for loop, it will work. Because now I is not a scalar value, it's a string, sequence. So one by one, first time 1 will come, then 2, then 3, and it will print it. Yes or no? At least future में तो भूलोगे नहीं. And Yes. please don't forget the basics of for loop. For loop का strict rule क्या है according to Python? That for loops are applicable only for iterable. iterable. So sequence also come under that category only. Generators भी उसी category में आते हैं. तो generators चलेंगे, sequence चलेगा और iterable चलेगा. Getting? तो इस प्रोग्राम में क्यों एरर आया? क्योंकि x is not a iterable. It is just a integer object. Getting? तो कितने basic चीज है ना? So it gives you a type error. And why type error? Because it will say x is not iterable. Okay? चलो. Now coming to the next one. अब ये इसमें देखो. First condition is, and we just have to print how many times it is going to print hello. Hello कितनी बार print होने वाला है. Getting? And in this check, all are and. This condition and this condition and this condition. तो ending में सब true रहेगा तो ही true. So check here, these two part are always going to come true because I is 1 and it is getting doubled every time. देखो, I star equal to 2. Is it getting doubled every time? 1 है, फिर next time 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32. It is getting doubled. So as it is getting doubled, always it is greater than 0. And 1 तो always true ही होता है. तो ये part देखो ही मत, ये हमेशा true रहेगा, ये हमेशा true. Just keep checking whether this part is true. तो जब तक ये part true है, तब तक print double. Again, ये part true है, तो print double like that. No need to check this part. ये purposely दिया है. Generally just time waste करने के लिए कि आप check करते हो क्या ये नहीं. So those who are smart people, they will not find out whether this is true or false. Why? Because this is always going to be true and this is also going to be true. We just have to check whether this part is true. Okay, so tell me, first time I is 1 less than 10,000? It will print hello. Yes. 1 is less than 10,000 and this part is obviously true. 1 is greater than 0, 1 is always true. It will print hello, make it 2. Again, 2 less than 10,000.
print hello, then 4, then 8, then 16, getting, then 32. This is logarithmic growth. इसलिए logs and all सब पढ़ा रहता है ना, right or no? 11, 12 log पढ़ा है तुम लोगों ने, logarithm, complex numbers, right? This is log के terms में वो बढ़ रहा है, getting, to the base 2. तो 32, 64, then 128 हो जाएगा, 256 होगा, 512 होगा, right or no? Will it become 512? Will it become 1024? Then it will become 2048. You can check. Okay. Will it become 4096? And last, it will become 8192. And जैसे 8192 हुआ, 8192. Okay. And 8192 तक less than 10,000 है. Print hello. And 8192 का double 16,000 something होने वाला है. बट इसका जब डबल होगा तो वो 16,000 समथिंग इज नॉट लेस देन 10,000. False, it will stop. So how many times it has done this? You can do this counting. एंड अगर आपने 8192 का लॉग निकाला ना टू द बेस 2, वही वैल्यू आएगा, लॉग ऑफ 8192 टू द बेस 2. इसलिए पाइथन को मैथ्स ही बैकबोन है. पाइथन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. उसका हिस्ट्री आपको भूलना नहीं चाहिए. पाइथन इज बीन डेवलप्ड ओनली इन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नेदरलैंड. तो ऑब्वियसली वो जिस सेंटर पे बना है, तो ऑब्वियसली पाइथन इज centered on maths, and that is the reason it is more used in machine learning, artificial intelligence, data science, and all these fields are having backbone as mathematics. Deep learning, computer vision, इसमें extensive matrices का use होता है. ठीक है, तो कितना आ गया ये? एटलीस्ट ये तो काउंट करोगे ना, ये मत बताओ एटलीस्ट ये कितने बार आ गया. 14. So it is going to print hello how many times? 14 times. You can cross verify also. And mathematical verification मैंने बताया. अब 8192 का log निकालो. Log of 8192 to the base 2. You'll get 14. ठीक है? चलो. Moving to the next one. Quickly. फटाफट. फिर कुछ exercises भी solve करने. I equal to 5, then while true, if I mod, this is octal representation. Yes or no, guys? How do you represent octal values in Python? 0, O, and then octal. Print I equal to I plus 1. Again, इसमें भी again basics है, एकदम basics पे जाना है. First tell me, can 9 come in octal representation? No. No. Octal representation is made up of 0 to 7 combination. Yes or no? Others also? Yes. Right? Rabia also, you should also participate in the She is not there. interaction. She is not there, छोड़ के चली गई. ठीक है. She can attend only 1 hour, I guess. 0 to 7. Only combinations allowed, ना? 0 to 7 के ही combinations allowed है, guys. Yes. Yes or no? तो Yep. 9 आ सकता है क्या ऑक्टल में? No. नहीं. तो इसी जगह पे वो एरर देगा. नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सोचने लगता है कि वो आई डिविजिबिलिटी चेक एंड फिर ब्रेक होगा, नहीं तो प्रिंट. बट इफ यू चेक इन दिस होल कोड, दिस पार्ट ओनली इज व्हाट? एरर. गेटिंग? ऑक्टल में क्या आता ही नहीं है. सी 0, O and 9 if I write. It will give that invalid octoliteral 9. See, invalid digit 9 in octoliteral. Because in octal 9 doesn't come. ठीक है? Therefore, this code will give you what? Error. हाँ, but इसके जगह पे 9 के जगह पे कोई और वैल्यू होती थी.
ओके लाइक टेल मी 0O11 होता था तो क्या प्रिंट करेगा 0O11 11 print 0O11. How much is 0O11 in decimal, guys? Yes. 0O11. This is octal. So how much it is in decimal? 8 raised to 0, 8 raised to 1. 9. 9. Is it 9 in decimal? तो सेम प्रोग्राम में 0O9 के जगह पे 0O11 लिखा रहता था. तो will the loop go? Loop चलेगा ना? So will it Yes. print 5 first, then 6, then 7, then 8? क्योंकि 8 11 से divisible नहीं, फिर 9, फिर 10, right? Last का 10 print हुआ. Then it will come to plus 1, 11. Then is 11 mod 11 0? Next value 11 हो जाएगा ना? Break. नहीं, but मैंने क्या किया? नहीं, sorry, very sorry. सर 9 पे ब्रेक होगा ना? हाँ 9 पे ही होगा. Very sorry, guys. I took that octal 11 only. Very sorry for that. यहाँ तक आएगा ही नहीं. ये भी नहीं आएगा. 9 पे ही रुकेगा. तो 5, 6, 7, 8 and 9. 9 ही ना? That is octal 11. But decimal कितना है वो? 9 है. तो it will just check 9 divisibility. So is 5 divisible by 9? No. 6 divisible by 9? 7 divisible? 8 divisible? 9? Yes. Stop. So it will print 5, 6, 7, 8. चेक करके भी देख सकते हो तुम लोग. ठीक है? So 0O11 is 9. So I'm writing I equal to 5. Then I'm writing while true. If I mod 0O11 double equal to 0, break. ठीक है? Else print I and make I plus equal to 1. See, is it printing 5, 6, 7, 8? And when I becomes 9, 9 mod 9 is 0 and it breaks. This is 9, okay? But here, this is not allowed only in octal. It gives you error. ठीक है? Okay, अभी अगला मॉड्यूल नहीं शुरू करना है. उसके पहले we will start with some exercises. इसके ऊपर based कुछ exercises देखते हैं. So this part, I hope it is clear. Okay, so now I have taken some few 7 to 8 trace outputs, but it's not like that these are only the trace output. Okay, so I'll give you some MCQ test papers. huh? अब ये दोनों मॉड्यूल्स का एक टेस्ट पेपर मैं पुश करने वाला हूँ, नोट्स भी दे देता हूँ, असाइनमेंट्स भी देता हूँ. Okay, now you try to solve some exercises based on all the control flow. Okay, जितने भी कंट्रोल फ्लो पे एक्सरसाइजेस है वो देखेंगे. Second question. First is quite easy. You can do it. Second एक try करो. Write a program to accept 3 numbers and check whether the first is between the other 2 numbers. आपको 3 numbers accept करने हैं. ठीक है? एंड फिर चेक करना है कि ये फर्स्ट नंबर ये बाकी दो के बीच में है. बट व्हेन वी से बिटवीन they are inclusive. 10 and 30 both inclusive, means it should not be 11 to 29. 10 also inclusive, 30 also inclusive. तो देखो, is 20 between 10 and 30? Yes. तो मैसेज आना चाहिए 20 is between 10 and 30. But if 20 is not between 10 and 30, then it should give appropriate that it is not between 10 and 30. Okay, so very simple question. 3 numbers you have to accept. Okay, now if possible, please try to install VS Code. अगर आप VS Code install कर पाते हो तो very good. You can just download करना है. See, download VS Code for Windows.
ओके गाइस, अगर आपके पास ऑलरेडी VS कोड है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. तो डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज. तो दिस इज जस्ट अ एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट पीपल, बट इट इज नॉट पाइथन. ये जस्ट एक एडिटर है जिसमें पाइथन प्रोग्राम्स कर सकते हो. बट पाइथन के प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए आपको पाइथन सॉफ्टवेयर लगेगा ही, जो पहले हमने इंस्टॉल किया ऑलरेडी, दिस वन. करेक्ट? तो this is just a editor. It is just an environment where you can develop your programs. You can open your folder, you can see your files, you can create new files. Okay, you can do basic cut, copy, paste, all those operations. Then within that environment only, you can run your script. You can see the output of your script. Correct? So it is just a environment provided where you can develop your programs. Okay? So click on this, and it is the most popular editor used in the industry. After like PyCharm and all, JetBrains वालों ने PyCharm वगैरह दिया. So yeah, if your OS is Windows, then use down this one. If you're working on Mac, do this. If you're working on Linux, do this. Okay, to those who only use free things, then go to Linux. Okay, Linux from Linus Torvald, one person who introduced the concept of open source products. तो Mac पे काम कर रहे हो तो Mac use करो. ठीक है? तो if you are on Windows, download this. Okay, it will start downloading it. Now, actually, in my machine, already VS Code is there, but still for you people, I'm showing it. But remember, only putting VS Code is not sufficient. उसके पहले आपका Python installation होना चाहिए. Already you have done Python installation. So now you just install this. So click on it. Once the download is done, just click on it. ऐसे many editors हैं जिसमें आप Python का कोड लिख सकते हो. Okay. Next module जब start करेंगे, when we'll start with the next module of data structures and all. So in that I'll take you to some cloud-based editor. Cloud-based के ऊपर like Google Colab वगैरह use करेंगे. तो feel सबका दूंगा, so that when you work in the industry, you should be familiar with all. ठीक है? So I'm just writing I accept agreement and next. Okay, if you want the desktop icon to be created, click on it, next, and install. Okay, the installation will be done. Now we have created one folder already in the beginning, second lecture. That folder only you can open it in this VS Code. वही folder इसके अंदर open कर सकते हो, and you can start creating new file. You can open and see the old files. ठीक है? Just एक बताता हूँ कि if you want all the Python syntaxes and all automatically available, then you just have to add one Python plugin. So I'll tell you how to add that plugin. Don't worry. वो extension कैसे add करना है. ठीक है? If you have doubt in this, you can ask me. And already if you have VS Code also, no problem. You can directly start using it. It's a very famous editor. Many people prefer using VS Code. And VS Code का एक benefit है कि it is not only for Python. You can use VS Code for Java programs. You can use it for JavaScript. कितने सारे languages के लिए आप ये एक ही editor use कर सकते हो. Some people prefer different editors. There is Atom, Sublime, Jupyter Notebook है. तो generally Jupyter Notebook and all, you use it for analytics part. या फिर जो अगले चैप्टर शुरू होने वाला है, अगला मॉड्यूल like list, tuple and all. For that, you can use Jupyter Notebook. I'll give you
feel of that as well. Don't worry. ठीक है? तो in your machine also, if it is done, you can give me quick confirmation कि आपने भी install कर दिया है VS Code. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? 1 minute now. Let's let it start. Okay, we'll directly launch it. But नहीं, अगर आपने अभी नहीं launch किया तो and also from search you can search for VS Code. ठीक है? Maybe like tomorrow again you want to start VS Code. कल भी वापस VS Code शुरू करना है. तो यहाँ से सर्च में ढूंढ सकते हो. You can search या you can write VS Code तो वो आ जाता है start. ठीक है? It's getting little slow. My machine is slow, not from your side. तुम्हारे side fast भी होता है. Okay. Now what you have to do is open your folder. You can come to File. You can close all these tabs. Open folder. So if you have created already some folder, last time हमने एक folder अपना बनाया है C drive पे. If you remember, ये मैंने किया है ना Python July 2026. So you can select that. नहीं किया है तो create here. यहाँ एक नया folder बना लो. Okay. For example, suppose मैं तुम्हारे लिए एक new folder बनाता हूँ. I give name to it as Python programs, whatever name you want, and फिर वो folder select करो. ठीक है? Automatically now you are in that folder. देखो इधर folder का नाम आएगा. ठीक है? AI assistant वो depends on the plugins and all what you have added. Okay. Now next what I told you is you have to add that Python extension. So you're able to see this. ये दिख रहा है ऐसे. ये ऐसे. इधर एक extensions दिखता है. Yes. Okay. You're able to see ये extensions वाला एक tab दिखेगा. Click. Yes. And in that select Python. अभी मेरे machine पे वो already है. इसलिए कोई it will say already installed है. Just select that Python. Okay. Can you see this Python? Click. And आपके यहाँ ना install वाला option आएगा. मेरे यहाँ uninstall because it's already there. For your machine, is it giving install? And अगर आपने भी already करके रखा है तो no problem. Yes, you can just give me that confirmation. तो अगर install option है तो click करो और install करो. So you are just adding that Python extension in this VS Code so that now once you start coding Python script, it will give you help related to Python. Python के syntaxes, if else, सब automatic add होते जाता है. ठीक है? तो just give me confirmation कि ये plugin आपका install हो गया रहेगा तो बताओ. Done. Yes, sir. Okay, that's all. And फिर यहाँ देखो वापस Explorer option दिख रहा है ना पहले left side Explorer. Come here and create one new file. अब मैंने ये नया folder बनाया ना तो I'll create a new file here. Okay. Whatever name you want to give to your program, जो भी नाम देना है like program1.py. Exercise solve कर रहे हो तो give according to that exercise number. It will be more better. जैसे exercise 2 का second program है. Exercise 2 का second program extension py. Enter. ये एरिया है जहां आप लोग टाइप करोगे. ये थीम भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट आई टेल यू दैट. ये जैसे डार्क थीम है आप लाइट थीम में आ सकते हैं. देयर आर प्रेफरेंसेस, वो प्रेफरेंसेस मॉडिफाई करने. ओके तो जस्ट
ये प्लस साइन दिखा न्यू का, और यू कैन गो टू फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। इतना जाने से अच्छा इधर एक प्लस साइन दिखता है, जस्ट क्लिक ऑन इट, गिव द नेम विद एक्सटेंशन py एंड स्टार्ट टाइपिंग योर कोड। ओके, तो अपने प्रोग्राम में क्या करना था, ये जो क्वेश्चन था, वी वर सपोज टू एक्सेप्ट, ओके, प्रिंट। देखो ये प्लगइन ऐड करने का क्या फायदा है, समझ में आया ना? इट गिव्स यू ऑल द ऑटो कंप्लीशंस। तो यहां देखो प्रिंट पिक किया, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट? तो print enter first number, it will wait for you to enter something. Whatever you enter will be returned as string. That string goes to int, convert to integer, a में आ गया, वापस b, print enter second number, c, int print enter third number. Okay. Now some say ask like, can I enter all the three numbers at a time? If you enter all the three, it will be one string. Then you have to split it at spaces. You can do it. कर सकते हैं, but थोड़ा सा advanced level पे जाएंगे तो I'll show you how you can accept all three numbers at a time and then split it into three different tokens. ठीक है? Now, if Sir, यहाँ देखो, sir, हाँ, don't we have to type input as we are taking the input, right? oh, मैंने एक mistake, print नहीं, very good, very good, that is good catch. Very sorry, guys. Again, this is again a blunder. You're absolutely right. Instead of print, I was supposed to give input only, but I wrote print. But the thing is input, right? So input, then this message will come. You will enter something, and whatever you enter is a string. It will go to int. It will convert to integer. Okay, correct. You're absolutely right. Now the three numbers what you have accepted, you have to check whether A is between B and C. चेन रूल यूज कर सकते हो, हमने पढ़ा है, लाइक गेटिंग B लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू C. इज दिस वैलिड? रिलेशनल ऑपरेटर्स याद करो, रिलेशनल ऑपरेटर्स, Yes. and in relational operator there is a concept called chain rule. So if this, in this chain, if everything is true, the final is true. So here what we are checking, whether A is greater than equal to B and A is less than equal to C. हम क्या चेक कर रहे हैं, A ये B से greater than equal है and A ये C से less than equal है. So it proves that A is between B and C. Can I give print like this? Print, okay, A is between B and C. Can we split like this? स्प्लिट करके लिख सकते हो, एंड हर वैल्यू के बाद ऑटोमेटिक एक स्पेस आने वाला है. तो इफ A is 20, so it will give 20 is between 10 and 30. Right? You can do printing in many other ways. Print याद करो, printing कितने अलग अलग ways से हम कर सकते हैं. Else, I'm going to give print A is not between B and C. Is it right? In print function, whatever values you give to print function, whatever value, is it going to display all the values one after another? First value, second value, third value, fourth value, fifth value, all values one after another, and automatic there is a space between it. A फिर एक space आएगा, is not between, फिर एक space, with B फिर एक space, and space, and then C. There are other ways also, ना? Can we do it using formatted string? F string से भी कर सकते हो. ठीक है? Now you want to run this. रन करना है तो जस्ट एक टर्मिनल पे आओ और न्यू टर्मिनल, इधर एक टर्मिनल दिख रहा है आपके मशीन पे, ऐसे डॉट डॉट आया रहेगा तो उस पर क्लिक करो.
Maybe your screen is small. It depends on the inches. वो screen अगर small रहेगा, so it doesn't show all the options. थोड़े दिखाता है, dot dot दिखाता है. So can you see that terminal? New terminal. Okay. Right? ये new terminal आएगा यहाँ. My machine is little slow. Terminal means it's a command prompt. It is waiting for you to type the command. Okay. And it will take the command and give you the output for that. It's very slow in my case. Okay, in your machine, you're getting that terminal. Just give me that confirmation. Terminal, new terminal. Yes. It's becoming too slow. Okay. Now here what you have to do is just type Python and give the program name. Python space C, like this. Python. It's going a little slow from my side. Too much slow. What I'll do is I'll just try to. Still it is slow. What I'll do is I'll exit and then I'll restart my VS Code. Okay, you just have to write Python and your program name, space and जो भी आपके program का name है. Okay, see Python and the program name is exercise 2. आपको पूरा टाइप नहीं करना है, just थोड़ा सा टाइप किया, like ex, getting like this. Python ex and just if you press tab की press किया, automatic complete करता है. Auto completion facility है इसके पास. तो Python program name, enter. The moment you enter, it will start running this script. So the first thing is input. There's some issue on my side. See. So I'll give some input like 20, next as 10, next as 30. Is it giving message? 20 is between 10 and 30. If you just do up arrow key, it will give you the old command. Again enter. Now give some other values, like if I'm giving 10, 20, 30. 10, 20, 30. So 10, 20, 30. So is 10 greater than equal to 20?
अब ये 10, 20, 30 है, तो A 10 है, तो इज A ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा मैं रीड कर रहा हूं ऐसे, A 10 है और B 20 है, तो इज 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20? नो, नो. तो दिस पार्ट कम फॉल्स। तो चेन रूल है, चेन में अगर एक भी फॉल्स है पूरा फॉल्स है। In a chain, when all are true, then only the result is true. Here also old maths rule follow होता है। मैथ्स में ऐसे चेन रूल होता था ना, A लेस देन B लेस देन C, A लेस देन B लेस देन C, तो ऑटोमेटिकली A इज लेस देन C, ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई करते थे। ओके, तो सी 10 is not between 20 and 30, right? ऐसे और भी एग्जांपल्स है, चेक करो, कुछ इफ एंड एल्स पे बेस्ड है, समर ऑन लूप्स, थोड़े लूप वाले क्वेश्चंस है, वो भी ट्राई कर सकते हो। सर एक डाउट था. हाँ अगर वो जो अभी के एग्जांपल में अगर हमें वो कुछ भी करके अगर सॉल्यूशन निकालना ही था, मतलब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, अगर हमें मतलब कुछ भी करके जो मिडल वाला है वो फाइंड करना था, तो हमें 3 कंडीशन लगाने पड़ते क्या बीच में? लाइक फॉर एग्जांपल वी डिड बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी, देन फिर से ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, ऐसे कंडीशंस करने पड़ते हैं अलग अलग. तो किस केस में इफ यू वांट, क्वेश्चन अपना इतना ही था कि चेक करना है कि वेदर ए इज बिटवीन ए एंड बी। if for example I really want to know कि कौन सा नंबर है जो उन दोनों कौन सा नंबर है जो मिडल में आता है तीनों नंबर्स में, तो इंस्टेड ऑफ हाँ हाँ, प्रिंटिंग, तो देन यू हैव टू राइट द अदर कंडीशन। सो मतलब मीन्स आपको सिर्फ वो मिडिल वाला, इन दोनों में से हु इज मिडिल बिटवीन द अदर टू, यू वांट द मिडिल नंबर ना फ्रॉम द अदर टू, यस. राइट? तो हियर यू आर चेकिंग वेदर ए इज मिडिल, else if लिखते थे then B is between A and C, and else check करते थे C is between A and B, like this. And here यस. you will check else if, and फिर यहाँ कंडीशन ऐसे देते थे, now here A है ना, so here you'll write A less than equal to B less than equal to C. So here you are checking whether B is between A and C, right? तो आउटपुट ऐसे यस. आता था B between A and C, and otherwise तो डायरेक्टली ऑब्वियस है, अभी ऑब्वियस है कि हु इज बिटवीन, सी इज बिटवीन ए एंड सी, तो नो नीड टू चेक, तो यहां डायरेक्टली ही लिख सकते हो सी इज बिटवीन ए एंड बी। मीन्स यू वांट टू जस्ट प्रिंट हु इज बिटवीन हु, कौन यस. किसके बिटवीन है, ऐसे चाहिए, कर सकते हो ना। तो यू हैव टू राइट दैट मेनी, जैसे देखो इस सी में अब जो भी नंबर दोगे, लाइक 5 दिया, 8 दिया, 2 दिया, ओके, तो हु इज कमिंग बिटवीन हु, is 5 between 8 and 2, or is 8 between 5 and 2, or is 5 is between 2 and 8. 2 and 8? Getting? See. नहीं, but यहाँ बता रहा है 2 is between 5 and 8. Last, finally, A, B, C. We didn't give an increasing order, no? Okay, got it. So finally it has come here, which is valid also. 2 is between 5 and 8. When we check 5 is between 8 and 2, so no, 5 is not, because 8 greater है ना 2 से, 2 Yes. 8 होता था तो चल जाता था, तो 8 2 है, therefore it is saying no, 5 is not. Then you check whether 8 is between 5 and 2, वहां भी नहीं है, तो finally कौन है, 2 is between 5 and 8, which is more right, Okay, got it. right? But 2 is not between 5 and 8, no? Yes, it is technically not, but code के हाँ, वो according वो else है, ले हाँ, क्योंकि यहाँ अगर वापस मैं चेक करता हूँ तो here I can put third else if, third condition. getting where I take C less than equal to A, नहीं, पहले क्या लेना पड़ेगा, B and C, तो B, A between B and C, B between A and C, तो C between
A and B, right or no? Yes. Like this you'll check, and then you'll give whatever. And नहीं satisfy तो the values are not in the order only. अपने values order में दिए ही नहीं, इसलिए save करते जाना है file को. Because if you don't save the file, it will not take the updated code. But suppose I am giving an order now, 2, 5, and 8 अगर दिया. So now it is giving, right, that 5 is between 2 and 8. Yes. ठीक है, तो वो ऑर्डर में रहेगा तो इट विल वर्क फाइन. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में है ना? That in Yes. such cases you have to write that many ifs and else. But अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो नहीं था, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें जस्ट चेक करना था whether the first value is between the other two. This was our problem solution. ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, सॉल्व कर सकते हो. सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. लाइक ये वाला एक देखते हैं, लीप ईयर चेक करना. You have to accept a year and check whether the year is a leap year or not. Year accept करना है कीबोर्ड से, and फिर check करना है whether the year is a leap year or not. But leap year के लिए criteria क्या है? What is the criteria for year to be a leap year? Always remember, if year is divisible by 4, वो 4 से divisible होना चाहिए. Okay? But सिर्फ 4 से divisible होना चाहिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं. It should not be century year also. First criteria क्या कि it should be divisible by 4, but at the same time it should not be divisible by 100. Century year allowed नहीं है for the year to be a leap year. तो लीप ईयर होने के लिए क्राइटेरिया क्या? एक तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड उसी समय वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, और it should be divisible by 400. क्राइटेरिया क्या क्लियर है? एक तो 4 से डिविजिबल चाहिए, बट अगर 4 से डिविजिबल है तो उसी समय वो 100 से नहीं चाहिए, और it should be divisible by 400. Getting? इसलिए देखो, अगर हम लोगों ने 1900 कंसिडर किया ना, ईयर 1900, वो लीप ईयर नहीं है. यू कैन गूगल ऑल्सो एंड चेक. Google will tell that 1900 is not a leap year. Even to AI tool also you can ask. Why 1900 is not a leap year? कुछ लोगों को लगेगा 4 से तो डिविजिबल है, right or no? Is 1900 divisible by 4? Yes, it is divisible, right? But उसी समय वो 100 से नहीं होना चाहिए, but it is divisible by 100. Is it a century year? Century year में समझता है ना, multiple of 100. Getting? Year 2000, year 2100, year 2200. Understanding or no? Year 2100 तब तुम लोग रहेंगे, हम लोग पता नहीं. Getting? So 1900 is divisible by 4, but at the same time it is divisible by 100 also, जबकि वो नहीं होना चाहिए. तो ये फेल हो गया, ये क्राइटेरिया. फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या कि वो 400 से डिविजिबल चाहिए, but 1900 is not divisible by 400. Is it divisible by 400? 4, 8, 12, 16, 2 में 20 नहीं आता है ना ये, तो ये भी फेल हो गया. इसलिए 1900 क्या नहीं है? लीप ईयर. हाँ, but year 2000 is a leap year. Why year 2000 is a leap year? Is it divisible by 4? Yes. But is it divisible by 100 also? Century year भी है, तो वो नहीं होना चाहिए था. तो ओके, ये पार्ट फॉल्स गया. But is 2000 divisible by 400? Yes. Is 2000 divisible by 400? Yes, because 5 4s are 20. It is divisible. तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है.
इसलिए 2000 क्या आता है? लीप ईयर। गेटिंग? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो कंडीशन समझ में आए? यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस। एक क्या होना चाहिए? वो डिविजिबल बाय 4 चाहिए, बट उसी समय वो सेंचुरी ईयर नहीं चाहिए, और एट द सेम टाइम इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। ठीक है? तो चलो, अगर हम लोग यहाँ एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम नंबर क्या था? 7। तो आई गिव प्रोग्राम नेम लाइक दैट, एक्सरसाइज। न्यू पे क्लिक किया, exercise 2 7.py. You have to accept year. I'm just accepting it in y. Int input enter year. ठीक है? क्राइटेरिया क्या लिखोगे इफ में? इफ y mod 4 डबल इक्वल टू 0। ये ऑपरेटर्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो y mod 4 डबल इक्वल टू 0 मीन्स डिविजिबल बाय 4, and at the same time not divisible by 100, y mod 100 not equal to 0, or y mod 400 डबल इक्वल टू 0। एंड आपको पता है एंड एंड और में एंड को ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो ये दोनों पे ब्रैकेट जाएगा, मीन्स ये दोनों क्लोज जाएंगे। हु विल गेट क्लोज टू ईच अदर? दिस टू। ठीक है? एंड और ये पार्ट। तो कंडीशन क्लियर है, डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100, और डिविजिबल बाय 400। I'll give message y is a leap year। ठीक है? else I'll give message y is not a leap year। Is it clear, guys? What do you say? Test it। टेस्ट करके देखो। यहां पाइथन एक्सरसाइज 2 टैप करोगे ना, तो वो ऑप्शन देते रहेगा। तो एक्सरसाइज 2 का 2 नहीं चाहिए, एक्सरसाइज 2 का 7 चाहिए। ठीक है? तो एंटर, गिव द इयर्स, लाइक आई एम गिविंग 1900। डू यू रिमेंबर ना? इज 1900 a leap year? No. No, because it is divisible by 4 but it is divisible by 100 also। तो अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसी समय वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, बट ये है सेंचुरी ईयर। तो चलो, एटलीस्ट 400 से तो है क्या, बट वो 400 से भी नहीं है, इसलिए नहीं आता। सी 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। बट इफ आई गिव 2000, तो 2000 में ये पहला पार्ट फॉल्स जाता है। क्यों? क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है बट वो सेंचुरी भी है। तो एटलीस्ट 400 से है क्या? यस, देयरफॉर इट गिव्स। गिव एनी अदर। 1996, what do you say? Is 1996 divisible by 4? Yes. Yes. And is it not divisible by 100? Yes। तो दोनों ट्रू है ना, एंड में दोनों ट्रू ट्रू। इस साइड क्यों जाना है ना, और के ये पूरा ट्रू है। 1996 is a leap year। गेटिंग? तो ऐसे बाकी के भी इनपुट्स देख सकते हो, लाइक आई एम गिविंग 1998, सपोज 1998 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1998 4 से डिविजिबल नहीं है। अभी 4 से नहीं है तो ये फॉल्स आया, तो एंडिंग में एक फॉल्स पूरा फॉल्स। ठीक है, चलो ये पार्ट देखेगा, बट वो 400 से भी डिविजिबल नहीं है। गेटिंग? So it gives you 1998 is not a leap year। Okay, I hope it is clear। Yes. लीप ईयर पे ही बेस्ड था ये क्वेश्चन भी। चलो, मैं और एक लूप्स का हम लोग एक सेशन अलग रखते हैं, मैं मिक्सअप नहीं करता है। आज हम इफ एल्स के ऊपर ही बेस लेंगे। जैसे ये 10th क्वेश्चन है, देखो ये ट्राई करो। Write a program to calculate the roots of a quadratic equation। Quadratic equation के roots find करने। But here they have mentioned consider all possible cases।
That is important. तो consider all possible cases, तो if and else तो आएगा. Okay, so first of all, what is a quadratic equation? थोड़ा एंड में जाके मैं जहां स्पेस है वहां लेता हूँ. We have space for writing. I'll take that space. चलो ये वाली जगह ले लेता हूँ. ठीक है. Okay, so what is a quadratic equation? So quadratic equation is a one variable polynomial of order 2, second order polynomial. देखो a x square plus bx plus c, इसको हम quadratic equation कहते हैं, equal to 0. Okay, in this a, b and c are coefficients. इसको हम coefficients कहते हैं. ये constants होते हैं. ये constant है, like 5x square plus 3x plus 9 या only x square plus 2x plus 1. तो a, b and c क्या रहने वाला है? Constant. ठीक है. x is a variable and it is a single variable polynomial of the order 2, highest order 2 है. So as the highest order is 2, here you'll get two possible solutions. दो ही solutions रहेंगे. x के दो possible value ढूंढने हैं, such that when you put that x here, the equation is satisfied. वो x की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करोगे, वो जब ये इक्वेशन में डालोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कि लेफ्ट साइड 0 आएगा, राइट साइड 0. a, b एंड c तो ऑलरेडी दिए हुए कोएफिशिएंट्स है. हियर हाउ डू वी फाइंड? तो रूट्स फाइंड करने के लिए एक्चुअली देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कॉल्ड माइनस b प्लस और माइनस, इसलिए प्लस और माइनस लिखा है. देखो प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस एक रूट, एक बार माइनस दूसरा रूट. अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. कुछ याद है? ये तो 10th में था हम लोग को, 10th या 9th वगैरह में ये कॉन्सेप्ट कवर करते थे. अपॉन 2a. यस, अदर्स ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, ऐसा एक फॉर्मूला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, तो एक बार प्लस लोगे तो एक रूट आएगा, माइनस आएगा तो दूसरा. बट द प्रॉब्लम इज अबाउट दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं. तो वी कॉल इट एज d, विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है गाइज. नाउ देर आर पॉसिबिलिटी, चांसेस कि ये जो आया है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 आ सकता है. चांसेस है ना, वैल्यू पे है ना. ये a अगर 1 है, b अगर 2 है, c 1 है, तो बताओ b 2 है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो इट विल बी 4 माइनस 4 0. तो ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी 0 ऑल्सो. Yes. दिस b square minus 4ac कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव है तो उसका रूट निकालें. बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है. याद करो, लाइक ये सब पढ़ाया हुआ है, तो मैंने नहीं, बट कभी तो आपके मैथमेटिक्स टीचर्स ने पढ़ाया. आई हैव लर्न फ्रॉम वेरी नॉर्मल कॉलेज, वो ऐसा कुछ हाईफाई कॉलेज नहीं था, बट फिर भी हमारे जोशी सर वाज द ग्रेट लेजेंडरी पर्सन इन मैथमेटिक्स. तो उन्होंने ऐसे कुछ ठोस के रखा हुआ है कि लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, is this part positive also, this part negative also, and this part 0 also. 0 रहेगा तो b अपॉन 2a, बस उतना ही रूट है. देखो मैं इधर कंडीशंस देता हूं. इफ d इज कमिंग आउट टू बी 0, ये एक केस है, तो आपके रूट्स क्या रहेंगे? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a. That's all. क्यों?
क्योंकि वो जो सेकेंड पार्ट है वो तो जीरो आने वाला है ना, ये रूट ऑफ समथिंग, दिस इज जीरो, तो यह रूट ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए, दोनों रूट सेम है। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस पार्ट? अब दूसरा पार्ट लेते हैं कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है, इफ दैट d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये d है, d अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपके दो रूट्स क्या रहेंगे, x1 x2, x1 is minus b plus root of d अपॉन 2a, वो जो d वही था ना, ये पूरा पार्ट d है तो उसका रूट लो अपॉन 2a, and what will be x2 minus b minus root of d upon 2a। ठीक है, हो गया, ये आ गया। बट अगर d नेगेटिव है तो प्लीज याद रखना, नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर उसके रूट्स क्या आते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। इट विल गिव यू टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मींस एक प्लस है तो दूसरा माइनस, मींस एक a प्लस बीजे तो दूसरा a माइनस बीजे। इट विल गिव यू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला तो उसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रहेगा, तो पहले रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। देखो, रियल पार्ट इज माइनस b अपॉन 2a, दैट्स सिंपल, इट इज b अपॉन 2a। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या रहने वाला है, तो वो देखो, इमेजिनरी पार्ट इज रूट ऑफ माइनस डी, क्योंकि डी ऑलरेडी नेगेटिव है ना गाइस, डी ऑलरेडी लेस देन जीरो है, मीन्स वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, उसका रूट अपॉन 2a, ये आपको देगा एक इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। अभी आपके दो रूट्स आएंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें रियल इज r प्लस ये जो इमेजिनरी कैलकुलेट किया है वो इमेजिनरी j, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, x2 इज इक्वल टू रियल माइनस इमेजिनरी j। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है, तो यू विल गेट दिस एज द रूट्स, दो रूट्स आएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो आप लोगों को ये तीनों कंडीशंस कंसिडर करनी है कि d जीरो है तब क्या, d ग्रेटर देन जीरो है तब क्या, एंड d लेस देन जीरो है तब क्या। अंडरस्टैंडिंग गाइस? इनपुट क्या लेना है, कोएफिशिएंट्स a b एंड c। तो फ्रॉम यूजर व्हाट विल बी एक्सेप्टिंग, यूजर से एक्सेप्ट क्या करोगे, a b एंड c एज थ्री कोएफिशिएंट्स, तीन कोएफिशिएंट्स। फिर d कैलकुलेट करोगे, फिर चेक करो d जीरो है क्या, यस तो आपका x1 x2 ये आ गया, d पॉजिटिव है क्या देखो, यस तो x1 ये x2 ये, राइट, एंड नहीं तो रियल निकालो इमेजिनरी निकालो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाओ और वो आपके रूट्स है। ठीक है, तो इज दिस कंसेप्ट क्लियर, देन यू कैन राइट प्रोग्राम फॉर इट। यस or no, which Yes. program it was, 10th program, chalo, suppose I'm keeping it as it is, I'll create one more file for you, exercise 2 10th question dot py. Okay, you can accept that coefficient, suppose आप coefficient whole number ही देने वाले, तो int input enter coefficient a, ओके, फिर b देता हूं int input enter
coefficient b, and c int input enter c. ओके, तीन कोएफिशिएंट्स एक्सेप्ट किए, अब d कैलकुलेट करो। d क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। इज दिस राइट? ये पहले बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स b इंटू a, b इंटू b माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये पार्ट क्लियर है? a एक्सेप्ट किया, b एक्सेप्ट किया, c Yes. एक्सेप्ट किया, d कैलकुलेट। नाउ गो ऑन चेकिंग व्हाट d इज। पहले चेक करो d 0 है क्या। अगर d 0 है तो x1 एंड x2 दोनों सेम आने वाले हैं। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? माइनस b अपॉन 2a। 2a को ब्रैकेट डालना पड़ेगा गाइस। अगर 2a को ब्रैकेट नहीं दिया तो प्रेसिडेंस वाइज देखो ऐसे होगा, अगर ब्रैकेट नहीं देते हो तो देखो प्रेसिडेंस वाइज डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मल्टी दोनों को प्रेसिडेंस सेम है, तो वो लेफ्ट टू राइट लेगा और पहले b को 2 से डिवाइड कर देगा गाइस। b को 2 से डिवाइड, एंड जो आंसर आता है वो a से मल्टीप्लाई, तो a न्यूमरेटर में चला गया। गेटिंग ऑन? तो Yes. इसलिए सेपरेट आपको किसके लिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा? 2 इंटू ए। गेटिंग? ओके, तो दोनों रूट्स क्या है? सेम, माइनस b अपॉन 2a। अभी ELF d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो x1 कितना बताया था? x1 माइनस b प्लस रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर पार्ट लेते हैं, माइनस b प्लस रूट ऑफ d। अभी रूट ऑफ d कैसे कैलकुलेट करोगे? d डबल स्टार 0.5। आई होप यू नो इट। इज डबल स्टार ऑपरेटर अवेलेबल इन पाइथन? एक डबल Yes. स्टार ऑपरेटर है ना, जो रेस टू का काम करता है। रेस टू का काम कौन करता है? डबल स्टार। ये ऑपरेटर हमने पढ़ा है, डबल स्टार इज अ रेस टू। एंड बताओ, एनीथिंग रेस टू हाफ इज रूट ओनली ना, बेसिक है ना, रूट ऑफ, है ना, ये स्कूल में सब पढ़ा हुआ है। रूट ऑफ 5 जब मैं लिखता हूं तो इज रूट ऑफ 5 सेम एज 5 रेस टू हाफ? राइट? तो Yes. मैंने हाफ को 0.5 ले लिया, तो माइनस बी प्लस डी रेस टू हाफ डिवाइड बाय 2 इंटू ए। एंड x2 क्या आएगा? सेम, सिर्फ यहां माइनस डालना है तुम लोगों को। ओके गाइस, तो एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस। एंड एल्स के समय क्या करना है? वो नेगेटिव ही है। d अगर 0 है तो ये आ गया, d पॉजिटिव तो ये, बट एल्स में मींस d नेगेटिव है तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रियल पार्ट। चलो मैं रियल कैलकुलेट करता हूं। रियल इज माइनस b अपॉन 2 इंटू a, एंड व्हाट इज इमेजिनरी? IMAG कर देता हूं। इमेजिनरी के लिए देखो क्या दिया था, रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a। माइनस डी क्यों लिखा? क्योंकि d ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का रूट तो वैसे भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो व्हाट आई डू, माइनस डी ले रहा हूं, डी ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, डबल स्टार 0.5। ठीक है, यह हो गया। डिवाइड बाय किससे करना है? बाय 2 इंटू ए। इज इट राइट? देखो, डिवाइड बाय 2a, रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a। तो माइनस डी का रूट ले लिया। ठीक है, माइनस डी मीन्स वो प्लस डी होने वाला है, अपॉन 2a से डिवाइड किया। अभी अपने हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, तो x1 इक्वल टू, कैन वी डू लाइक दिस, कॉम्प्लेक्स ऑफ रियल कॉमा
इमेजिनरी। हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा है, कास्टिंग का टॉपिक जब पढ़ा था, टाइप कास्टिंग दिया है ना, कॉम्प्लेक्स x, y, तो इट गिव्स यू x प्लस वाई जे। यहां इमेजिनरी को सिर्फ माइनस देता हूं, इमेजिनरी। ठीक है, ओके। अब जिस किसी कंडीशन में जाए, इफ में जाए तो x1 x2, एल्स इफ में तो x1 x2, एल्स में तो जो x1 x2 आए वो प्रिंट करता है मॉनिटर पे, प्रिंट x1 इक्वल टू कॉमा x1, प्रिंट x2 इक्वल टू कॉमा x2। दैट्स ऑल। नाउ यू गिव इनपुट। अभी इनपुट पे वो तय होता है कि क्या टाइप का इनपुट देगा। इफ यू राइट CLS, it will just clean the screen. Okay, 10 Python exercise 2 10 चाहिए हमें, एंटर। गिव इनपुट। जैसे इनपुट दोगे, लाइक सपोज मैंने दिया 1 2 1, 1 2 1। इन दिस केस टेल मी, विल इट कम टू d इक्वल टू 0? देखो b कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 0 आएगा। तो विल इट कम इन दिस केस? पहले वाले केस में आएगा ना, दोनों रूट सेम रहेंगे। देखो x1 भी -1 है, x2 भी -1। ठीक है, कुछ और इनपुट देता हूं, लाइक आई एम गिविंग इनपुट एज 3 5 1, सपोज 3 5 1। विल इट कम इन दिस पॉजिटिव केस? 5 का स्क्वायर कितना आएगा गाइस? 25 25 minus 4 into 1 into, sorry, 3 into 1. 4 into 3 into 1. So it is 12. 25 minus 12 is 13. तो 13 is positive. तो ये पार्ट ले लो। एक रूट आया -0.23 और दूसरा आ गया -1.4। एंड नेगेटिव वाला केस भी लेता है। देखो जैसे मैं A देता हूं 10, B दे रहा हूं 3 एंड C दे रहा हूं 2। Will it come in negative case? B कितना है? 3। 3 स्क्वायर कितना है? 9। 9 minus 4 into 10 into 2, तो 9 minus 80 होगा, which is negative. So will it give you two complex numbers? Yes, देखो -0.15 plus something j and -0.15 minus something j. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बट जो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, yes, I hope it is clear to you guys. Yes, तो just quick confirmation दो मुझे। Yes, sir. So ऐसे काफी ifs पे questions ले सकता है। Okay, many are there, it's up to you. Like suppose ये एक लास्ट वाला तुम लोग ट्राई करो, फिर नेक्स्ट सेशन में सिर्फ लूप्स पे लिखेंगे। नेक्स्ट मीन्स नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी टुमारो, इट विल बी मंडे, बट अपना बाद में रेगुलर 1 आवर सेशन शुरू होगा। तो एक सेशन हम रखते हैं लूप्स पे एंड फिर नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे। ठीक है, तो मीन टाइम ये वाला क्वेश्चन एक ट्राई करो तुम लोग। Like you have to accept 3 positive integers for date. डेट को रिप्रेजेंट करने वाले 3 चीजें, डे, मंथ एंड ईयर। जैसे ये है तो आई एंटर 12 10 1984। ऐसे नहीं एंटर करूंगा, ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना है। तो फर्स्ट नंबर डे में दूंगा 10, मंथ दूंगा 10 एंड ईयर दूंगा 1984। इट शुड जस्ट गिव यू आउटपुट एज वैलिड और इनवैलिड। डेट वैलिड है या डेट इनवैलिड है। Getting? तो एक तो वैलिड होने के लिए मंथ 1 to 12 में ही होना चाहिए। अगर आपका मंथ 1 and 12 के रेंज में नहीं है तो डायरेक्टली वो इनवैलिड डेट है। यस और नो? बट अगर मंथ 1 to 12 के रेंज में है तो वो मंथ का भी कैटेगराइजेशन है। 3 कैटेगरीज आता है, एक 30 डेज वाले मंथ,
31 डेज वाले मंथ और एक फेब्रुवरी। बट फेब्रुवरी में भी दो होता है, एक 28 भी होता है, 29 भी होता है। लीप ईयर रहेगा तो 29, लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28। मुझे लगता है याद है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ना। एंड एक्चुअली हर ईयर में 365 1/4 डे होता है। 365 डेज नहीं होता है, 365 1/4 डे। तो 4 साल के बाद वो 1/4 1/4 1/4 1/4 एक दिन मिलता है, इसलिए फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है। Getting? तो 3 कैटेगरीज है, देखो इधर 4 6 9 11, ये सब 30 डेज वाले। 1 3 5 7 8 10 एंड 12, ये सब 31 डेज वाले। एंड अगर 2 रहेगा तो वो फरवरी है, तो उसमें अब फिर आपको देखना पड़ेगा कि ईयर लीप ईयर है क्या। अगर लीप ईयर है तो 1 to 29 में चाहिए, लीप ईयर नहीं है तो 1 to 28 में चाहिए। ऐसे इफ्स चेक करके लिख सकते हो। कैन यू चेक इट बाय इफ्स एंड एल्स? मल्टीपल इफ एल्स बनेंगे। ओके, देखो मैं क्विकली आपको बताता हूँ। इट इज 20th क्वेश्चन। I click here, exercise 2 20.py. First, you'll be accepting the day part, day, month and year. So D लेता हूँ in short. Input, enter day, M int input, enter month, and Y int input, enter year. ओके गाइस, ये तो चेक किया मैंने, ये इनपुट ले लिया। सबसे पहले क्या कंफर्म करो कि मंथ ये 1 and 12 के बीच में। कैन आई चेक लाइक दिस? 1 लेस देन इक्वल टू M लेस देन इक्वल टू 12। मीन्स M किसके रेंज में? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रोग्राम चेक किया था टू चेक वेदर A is between B and C. तो M is between 1 and 12. M is between 1 and 12. ये कंफर्म हुआ। ठीक है, स्पेसेस चाहिए कि नहीं ये आपके ऊपर है। So what it is confirming that M is between 1 and 12. Yes, तो फिर वो कैटेगरीज देखो कि 31 वाला है या 30 वाला है या मंथ 2 है। तो देखो, if M in, and you can create a list like this. इन ऑपरेटर है ना, इन ऑपरेटर का फायदा लेने का। इन ऑपरेटर चेक्स वेदर द एलिमेंट इज इन दैट इटरेबल। तो आप लिस्ट बना सकते हैं। तो पहले 31 वाले या 30 वाले, तुम्हारे ऊपर है। 4 6 9 एंड 11, तो आई पुट लाइक दिस 4 6 9 11। सो व्हाट वी आर चेकिंग इन दिस इफ, पहले वाले इफ ने कंफर्म किया कि M 1 to 12 में अंदर आए। अब सेकेंड इफ कंफर्म कर रहा है कि M इज विद इन दिस लिस्ट। M ये इस लिस्ट में है क्या? 4 है क्या, 6 है क्या, 9 है या 11? तो इन चार में से रहेगा तो आपके डेज किसके बीच में होने चाहिए बताओ? इफ 1 लेस देन इक्वल टू D लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। यस नो गाइस? चाहिए हाँ, 50 आएगा, ऊपर 30 चाहिए। 20 नहीं, वेरी सॉरी, 30। हाँ, वेरी सॉरी। ठीक है, 30 आना चाहिए। तो आई गिव वैलिड, एल्स व्हाट आई गिव? प्रिंट इनवैलिड। मींस क्या कंफर्म किया? क्लियर है? पहले तो कंफर्म किया कि मंथ 1 से 12 में है। यस, अंदर आके चेक किया कि मंथ ये इन चार में से है क्या? 4 6 9 11। तो अगर आपका मंथ इन चार में है तो डेज 1 to 30 ही चाहिए। तो कंफर्म करो कि आपका डे 1 to 30 में ही है क्या? यस तो वैलिड, बट नहीं है 1 to 30 तो डेट इनवैलिड दिया है आपने। बराबर कि नहीं? अभी एलसिफ क्या चेक करोगे? M इन, वो सब लो 1 3 5 31 डेज वाले जो है ना, ये 1 3 5 7 8 10 12 7 8 जुलाई एंड अगस्त आर ओनली 2 कंसेक्यूटिव मंथ विद 31 ना। वो हम नकल पे करते थे, अपने अपने नकल्स पे हमने काउंट करते थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, Yes. फिर 10 एंड 12। तो अगर मंथ इनमें से है तो डे क्या रेंज में होना चाहिए गाइस? 31
31. Yes, print valid. ठीक है, else print invalid. ओके, अभी देखना है तीसरा लास्ट तो क्या रहेगा, फेब्रुवरी है। यस नो, क्योंकि हमने पहले ही कंफर्म किया है 1 to 12। अब 4 6 9 नहीं है, 1 3 5 7 8 10 12 नहीं है, तो वो 2 ही होगा। तो लास्ट में क्या है, फेब्रुवरी। बट एल्स में अगर आया तो मंथ फेब्रुवरी है, तो ईयर लीप ईयर है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो पहले कंफर्म करो वेदर ईयर इज अ लीप ईयर। तो इफ y mod 4 डबल इक्वल टू 0, अभी हमने लीप ईयर चेकिंग का लॉजिक लिखा है, Yes. एंड y mod 100 not equal to 0 और y mod 400 डबल इक्वल टू 0। तो हमने क्या कंफर्म किया, ये तो क्लियर है ना कि लास्ट एल्स में कब आएगा, लास्ट एल्स में जब फेब्रुवरी है। 4 6 9 है तो ये इसमें चला जाता था, 1 3 5 7 8 10 12 है तो इसमें जाता था। इसमें आया मींस मंथ फेब्रुवरी है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि मंथ 1 to 12 है। आ गया फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी में लीप ईयर है ये भी पता चला। तो डेज कितने होने चाहिए, 1 लेस देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू 29, प्रिंट वैलिड। बट अगर 1 to 29 नहीं है, then you will print invalid. Else, now tell me, if it is not a leap year but it is February, February है but leap year नहीं है, तो 1 to 28 होना चाहिए। तो else में क्या चेक करूं, 1 less than equal to d less than equal to 28, print valid, else print invalid। ये भी हो गया। Now finally coming to this else, ये if else तो हो गया, ये अंदर वाला if else if else। बट ये जो if था ना 1 to 12, मंथ 1 to 12, इसका else क्या कहता है कि मंथ ही किसके रेंज में नहीं है। जैसे किसी ने मंथ 13 दिया, तो मंथ ही 1 to 12 नहीं है, तो डायरेक्टली ये else को ही आ जाएगा ना। तो एनीवे वो इनवैलिड ही है ना, डायरेक्टली इनवैलिड। इज इट क्लियर? Yes. नाउ यू कैन Yes. क्रॉस वेरीफाइड, अलग अलग इनपुट्स देके देखो। ओके, इन्होंने दिया है, देखो इधर सैंपल 12/10/1984, 12/10/1984। तो देखो 10 है, मंथ 10 है, तो 10 के लिए क्या अलाउड है, 1 to 31, तो ये 12 है, चलेगा। ओके, 12 10 1984, इज इट गिविंग वैलिड? दूसरा देखो 32 10 1920, 10 मंथ है ना, तो 10 मंथ के लिए 31 ही अलाउड है, बट आपने 32 दिया। देखो अगेन देता हूं, 32 10 19 क्या दिया था, 20, इज इट गिविंग इनवैलिड? फिर कुछ फेब्रुवरी वाले देखो, 29 to 1984, क्या कहते हो, 29 to 1984 के लिए क्या आएगा, 29 to 1984। फर्स्ट ऑफ ऑल 1984, इज इट अ लीप ईयर? Yes, sir. Yes. श्योर, ओके। तो अगर वो लीप ईयर है तो डेज 1 to 29 में चाहिए, है 29, इट गिव्स वैलिड। बट देखो हम लोग 29 to 2003 वाला लेते हैं, 29 to 2003, व्हाट डू यू से, 2003 इज अ लीप ईयर? No. तो वो 1 to 28 होना चाहिए, बट आपने 29 दिया, इसलिए वैलिड। तो अपने सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ईच एंड एवरी टेस्ट केस। 29 to 1900 के बारे में भी बताओ, 29 to 1900, इज 1900 a leap year? No. Yes. नो, No, no, no. नो। लिया, क्यों 1900 नहीं है, वो पता है ना कि वो 4 Yes. से डिविजिबल है, बट उसी समय वो 100 से भी है, बट जबकि 100 से नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 400 से होना चाहिए, बट वो 400 से भी नहीं है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो 1 to 28, it should be 1 to 28, but you have given 29. Is it giving invalid? Okay, so this way you can test any dates. ठीक है, so for today we have to take a pause here.